So we were at the point of dew point and the humidity. So we have seen the Hope's apparatus studying of the temperature. Also we have studied about the principle of the regulation and all. So next point which we are going to see, that is the dew point and the humidity. So about 71% of the surface of the earth is covered with the water. So जो अर्थ का 71% है वो वाटर से कवर्ड है. Due to the constant evaporation of the water, water vapor is always present in the atmosphere. मतलब जो constant evaporation of water का होता रहता है उसकी वजह से जो water vapor है that's always present in the air atmosphere. The amount of the water vapor in the atmosphere helps us to understand the state of the daily weather. मतलब जो भी डेली वेदर चेंजेस होते हैं that we can able to understand with the help of this atmosphere only, which and the amount of the water vapor which are present in that atmosphere. So the presence of the water vapor in the air makes that air moist. The moisture in the atmosphere, it is only called as the humidity. मतलब ह्यूमिडिटी क्या है? द प्रेजेंस ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट मॉइस्ट. मतलब जो वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है उसकी वजह से एयर जो है वो मॉइस्ट होती है, एंड दैट द मॉइस्चर विच इज प्रेजेंट इन दैट एयर or the atmosphere, it is called as the humidity. This is one of the important part, as this may asked in the as a definition of the humidity in the exams also. For a given volume of the air at a specific temperature, there is a limit on how much water vapor the air can contain. मतलब एक specific temperature पे और एक specific volume में of the air में कितने amount of the water vapor वो air hold कर सकती है. That is also having one of the limit. So, if the amount exceeds this limit, the excess vapor converts into the water droplet. और जब ये लिमिट एक्सीड हो जाती है, so the water which is present in, or the amount of the water vapor which is present in that air, so that gets converted into the water droplets. So when the air contains maximum possible water vapor, it is said to be saturated with vapor at that temperature. मतलब जब maximum possible water vapor जब air में contained होते हैं, so we can say that at that temperature the air is to be saturated. So the amount of the water vapor needed to saturate the air depends on the temperature of the air. So amount of the water vapor मतलब air में कितना water vapor amount हो सकता है, that depends on the उस air का temperature कितना है. So if air temperature is low, it will need less vapor to saturate the air. For example, if temperature of the air is 40 degrees Celsius, it can contain 49 grams of the water vapor per kilogram of dry air without condensation. If the amount of the water vapor exceeds this limit, the additional vapor will condense. However, if the temperature of the air is 20 degrees Celsius, it can only contain the 14.7 grams of the water vapor per kilogram of the dry air without condensing. If the vapor content in the air is less than the maximum limit, then air is said to be unsaturated. मतलब यहाँ पर परसेंटेज दिया है at what temperature the amount of the water vapor that the air can hold. So if the temperature of the air is 40 degrees Celsius, it can contain 49 grams of the water vapor per kilogram of dry air without condensation. अगर 20 डिग्री सेल्सियस एयर का टेम्परेचर है, so it can contain only 14.7 grams of the water vapor per kilogram of dry air without condensing. And if the vapor content in the air is less, मतलब maximum limit से भी कम है, so at that point we can say that air is unsaturated. So suppose unsaturated air at a certain temperature is taken and its temperature is decreased. A temperature is reached at which air becomes saturated with the vapor. This temperature is called as the dew point temperature. और अगर हमने जो अनसैचुरेटेड एयर है, अगर हमने अनसैचुरेटेड एयर ली और हमने उसका टेम्परेचर और कम कर दिया, और टेम्परेचर एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड विद द वेपर, यानी इतना कम कर दिया कि दैट द एयर बिकम सैचुरेटेड विद द वेपर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर. सो एट दैट पॉइंट दैट टेम्परेचर विच वी कॉल्ड इट्स एज द ड्यू पॉइंट ऑफ दैट टेम्परेचर. So the vapor content in the air is measured using the physical quantity called the absolute humidity. So जो एयर में जो अमाउंट ऑफ द वेपर जो प्रेजेंट है दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. The mass of the vapor present in a unit volume of the air is called as the absolute humidity. और जो mass of the vapor जो unit volume of the air में जो present है, मतलब एक यूनिट मतलब एक सपोज एक सिलेंडर है,
उसमें जो अमाउंट ऑफ द एयर जो हमने ली है, सो अमाउंट ऑफ द एयर वेपर उस एयर में जो प्रेजेंट होगा एट दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम, दैट इज ओनली कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो हमने देख लिया ऊपर। ह्यूमिडिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन द एयर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब दैट इज द ह्यूमिडिटी। बट हमने एक फिक्स्ड वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में जब हमने एयर लिया, और वहां पर हम जब चेक कर रहे हैं कि उस एयर में एट दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम की कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, दैट इज ओनली द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट मीन्स वी आर एब्सोल्यूट about the amount of the humidity which is present in that particular amount of the air which is taken. So generally absolute humidity is measured in the kilogram per meter cube, that is kg per meter cube. So ये kg per meter cube कैसे है? That is हम यहाँ पर देख सकते हैं कि kg that is the mass of vapor present in a unit volume, मतलब एक kg mass, एक kg unit वॉल्यूम दैट इज मीटर क्यूब, मतलब एक केजी वॉल्यूम, एक मीटर यूनिट वॉल्यूम के यहाँ इसमें कितना अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर उस एयर में प्रेजेंट है, दैट इज ह्यूमिडिटी। सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन द केजी पर मीटर क्यूब। The feeling of the humid or the dry nature of air not only depends on the amount of the vapor in the air, but it also depends on how close that amount is for making the air saturated with vapor. It means that it depends on the temperature of the air also. So the ratio of the actual mass of the vapor content in the air for a given volume and temperature to that required to make the air saturated with vapor at that temperature is called as the relative humidity. यहाँ पर definition अगर हम देखें तो बहुत बड़ी दी है, बट यहाँ पर जो रिलेशन दिया है दैट इज परसेंटेज ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट्स एक्चुअली द एक्चुअल मास ऑफ द वेपर, वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इन अ गिवन वॉल्यूम, मतलब गिवन वॉल्यूम में एक्चुअल मास ऑफ द वाटर वेपर कंटेंट कितना है उस एयर में, और मास ऑफ द वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन दैट वॉल्यूम, और कितने अमाउंट ऑफ द एयर, मतलब कितना मास ऑफ द वेपर रिक्वायर्ड है कि वो एयर एट दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम वो सैचुरेट हो जाएगा, दैट इज ओनली द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बट परसेंटेज में अगर हम बात करें, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दैट मीन्स वी हैव टू ओनली सिंपली मल्टीप्लाई इट विद द 100, दैट मीन्स वी विल बी एबल टू गेट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ दैट एयर। सो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट अ ड्यू पॉइंट इज 100%, मतलब जो ड्यू पॉइंट हमने देखा, व्हाट इज ड्यू पॉइंट? सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज, अ टेम्परेचर इज reached at which the air becomes saturated with the vapor, this temperature is called as the dew point of that temperature. सो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और यदि हम ड्यू पॉइंट के यहाँ पर बात करें, सो एट द ड्यू पॉइंट इट इज द 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज प्रेजेंट। इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60%, वी फील दैट द एयर इज ह्यूमिड। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज्यादा हो जाती है, सो वी कैन फील दैट द एयर इज ह्यूमिड। इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60%, वी फील दैट द एयर इज ड्राई। मतलब ड्यू पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज्यादा होगी, सो द एयर इज ह्यूमिड, और 60% से अगर कम होगी, सो द एयर इज ड्राई। During winter season, you may have observed a white trail at the back of a flying plane in the clear sky. As the plane flies, the vapor released by the aeroplane engine condenses and forms the cloud. If the surrounding air is having more relative humidity, it takes a long time for the white trail formed by the condensation of the vapor to disappear. If relative humidity of the surrounding air is less, either the size of the white trail may be small or it may not even get formed. और जो विंटर के सीजन में मोस्टली इट इज ऑब्जर्व दैट अगर एक प्लेन अगर आसमान में हमें दिखाई देता है, सो व्हाइट ट्रेल हमें उसका वहां पर पाथ में दिखाई पड़ता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विच इज प्रेजेंट। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी, सो वी विल बी एबल टू सी, मतलब जो व्हाइट ट्रेल होगा वो ज्यादा समय तक हमें दिखाई पड़ता है। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी, सो इट विल आइदर बी क्रिएटेड और जल्दी डिसअपियर हो जाता है। सो ट्राई दिस करके एक एक्टिविटी दी है, टेक अ बॉटल ऑफ द कोल्ड वाटर आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट आउटसाइड फॉर अ व्हाइल। ऑब्जर्व द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल। सो हमें क्या कहा गया है कि जो कोल्ड वाटर की बॉटल है जो हमने रेफ्रिजरेटर में रखी है, उसे हमें बाहर निकालना है, एंड
we have to place it, let it be placed at some time, और कुछ समय के बाद हमें उस बॉटल को ऑब्जर्व करना है. So what we can observe? So drops of the water can be observed on the outer surface of the bottle. In the same way, if we observe the leaves of the plants, grass or window glass of a vehicle in the early morning, we see water droplets collected on the surface. मतलब जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स हमें वो वाटर बॉटल के आउटर सरफेस पे दिखाई पड़ते हैं. सो दैट सिमिलरली इन दैट फैशन ओनली, सो वी कैन एबल टू सी the leaves, मतलब जो प्लांट के leaves grass होते हैं, so we can see the tiny water droplets present on the surface of that leaves or the grass in the early morning of the seasons. So through these two observations we sense the presence of the water vapor in the atmosphere. When air cools due to the decrease in the temperature, it becomes saturated with the water vapor. मतलब जब air कूल हो जाती है ड्यू टू द डिक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में कम हो जाने की वजह से एयर जब कूल हो जाती है, सो वो सैचुरेट हो जाती है विद दैट वाटर वेपर. एज अ रिजल्ट द एक्सेस वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू द टाइनी ड्रॉपलेट्स. द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ द वेपर इन दैट एयर. और यहाँ पर कहा गया है कि जब एयर में जो अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर है अगर वो एक्सीड हो जाता है, सो दैट एक्सीडेड वाटर वेपर इज गेट कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड दैट टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स वी कैन सी इन द फॉर्म ऑफ द ड्यू, and that is only the dew point temperature is decided by that amount of the water vapor in the air. So unit of the heat, आगे हीट के यूनिट्स के बारे में हमें यहाँ पर देखना है. सो क्या है? So the unit of the heat are joule in SI unit and calorie in CGS unit. So we have to, again it is important. So the unit of the heats are joule in SI unit and calorie in CGS unit. So there are the two, basically I want to show with the SI unit, that is system international. सो जो हम एसआई यूनिट के बारे में जो बात करते हैं, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल, दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट्स विच वी आर फॉलोइंग. और दो टाइप के जो यूनिट्स होते हैं, दैट इज द वन इज द एमकेएस सिस्टम, वन इज द एमकेएस सिस्टम एंड वन इज द सीजीएस. सो दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स जिसके बारे में हमने लोअर क्लासेस में तो स्टडी किया ही है, एंड वी विल बी स्टडिंग अबाउट मोर इन डिटेल इन द क्लास 11th साइंस, दैट इज द फिजिक्स. सो एमकेएस क्या है? दैट इज मीटर, kilogram and second. So this is basically regards with the length, mass and time. So because why we are considering only the length, mass and the time here? So because we have chosen these three quantities as the fundamental physical quantities for the measurement of the rest of the any other quantities. So length हो गया जो कि MK system में अगर हम देखेंगे, so we are measuring it with the meter, mass in the kilogram and time in the second. CGS, that is centimeter, gram and second. This is again the length, mass और यहाँ पर time. So because this knowledge is also important as we are studying about the SI units, that is the so the unit of the heat are joule in the SI unit and calorie in the CGS unit. तो SI unit में heat का जो unit है वो joule है और CGS unit में it is calorie. So the amount of heat necessary to raise temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius is called 1 calorie of the heat. So जो अमाउंट ऑफ द हीट नीडेड है टू रेज द टेम्परेचर, मतलब 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज द 1 कैलोरी हीट. सो कितना टेम्परेचर? 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. Similarly, the amount of heat necessary to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called 1 kilocalorie heat. 1 कैलोरी हीट, जबकि हम बात कर रहे हैं सीजीएस यूनिट, दैट इज 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस. और जब एमकेएस, दैट इज 1 kg वाटर फ्रॉम 1 डिग्री सेल्सियस टू 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 1 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ द हीट इज नीडेड. So it is clear from that 1 kilocalorie is equals to 1000 calorie. 1 kilocalorie मतलब 1000 calorie. Always remember we are having one
one thing given here. If we heat 1 kg of the water by 1 degree Celsius in different temperature range than 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius, the amount of heat required will be slightly different. It is therefore essential to define a specific temperature range while defining the unit of the heat. Calorie and joule are related to by the following relation. मतलब एक कैलोरी is equals to 4.18 जूल. So हमें यहाँ पर क्वेश्चन पड़ सकता है कि why this range, that is the 14.5 डिग्री सेल्सियस एंड 15.5 डिग्री सेल्सियस की रेंज क्यों चूज की. सो यहाँ पर रीजन वहां पर दिया गया है कि अगर हम इस रेंज से अगर डिफरेंट रेंज में अमाउंट ऑफ द हीट कैलकुलेट करेंगे 1 kg टू 1 डिग्री सेल्सियस रेस्ट टेम्परेचर करने के लिए, so the amount of heat required will be slightly different. So that's why they have chosen this specific temperature range for defining the one unit of the heat. और यहाँ पर कैलोरी और जूल का रिलेशन दिया है which will be required for solving the numericals, that is 1 calorie is equals to 4.18 joule. So again, introduction to a scientist, we have given the James Prescott Joule. He was the first person to show that kinetic energy of the tiny particles of the matter appears as a heat energy, and also that energy can be converted from one form to another. Conversion of heat energy to gives the to work gives the first law of thermodynamics. The unit of the heat is called joule after him. मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनके रिस्पेक्ट में जो ऐसा यूनिट जो है हीट का जिसे हम जूल कहते हैं, सो दैट इज द ओनली द साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल. तो उनके इस उन्होंने कहा था कि जो amount of the that is the kinetic energy tiny particles which are present in the matter appears as the heat energy. So as the energy is converted from one of form to the another, that is only the law of conservation of the energy which we are following from the in all the respects with all the laws which are following for the conversion. So that is the तो क्या है conservation of law of energy क्या है. So the energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form of the energy to the another form. That is only the law of conservation of the energy. So conversion of the heat energy to work gives the first law of thermodynamics, and this is only the first law of thermodynamics. The law of thermodynamics will be studied in the higher classes. So ये जो लॉ है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ द हीट एनर्जी टू वर्क. मतलब जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो वर्क के लिए, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो एक यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम देख लेते हैं. सपोज वर्क वी आर डिफाइनिंग एज वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव सीन रिगार्डिंग विद द वर्क. तो वर्क क्या है कि फोर्स अप्लाइड होने के बाद कुछ डिस्प्लेस होना. मतलब वी आर अप्लाइंग द एनर्जी दैट इज इन द काइंड ऑफ द फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. दैट मीन्स हम कुछ तो भी वहां पर फोर्स अप्लाइड कर रहा है विच इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एनर्जी. दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट वर्क जो है उसका अगर हम डायमेंशन देखेंगे और एनर्जी का अगर डायमेंशन देखेंगे हम, विच विल बी स्टडिंग इन द अर्ली नेक्स्ट फर्दर हायर क्लासेस. सो वर्क और एनर्जी का डायमेंशंस दोनों का सेम रहता है. And that is why this is the first law of thermodynamics, that is conversion of the heat energy to the work. The unit of the heat is called joule after him. आगे हमें टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या, हमें यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है. मटेरियल अ ट्रे विद द थिक लेयर ऑफ द वैक्स सॉलिड स्पीयर्स ऑफ द आयरन लीड एंड कॉपर ऑफ इक्वल burner or spirit lamp large beaker. So take three spheres of the iron, copper, and lead of equal mass. Put all the three spheres in the boiling water in the beaker for some time. Take the three spheres out of the water. All the spheres will be at the temperature of 100 degrees Celsius. Put them immediately on the thick slab of the wax. Note the depth that each of the sphere goes into the wax. हमें सिंपल सी एक बात करनी है कि तीन स्पेयर्स लेने हैं विच ऑफ द डिफरेंट मटेरियल बट ऑफ द इक्वल मास. आयन का लेना है, कॉपर का और लीड का. और उन सबको हमें पुट ऑल द थ्री स्पेयर्स इन द बॉइलिंग वाटर इन द बीकर ऑफ द फॉर सम टाइम. और एक बॉइलिंग वाटर में हमें वो तीनों स्पेयर्स डालने हैं. और कुछ समय के बाद हमें उन तीनों को निकालना है. और एक जो बैक स्लैब का जो ट्रे है उसमें हमें वो तीनों स्पेयर्स को डालना है.
And we have to observe that the depth at which the each sphere goes in the wax slab. So the sphere which absorbs more heat from the water will go more heat to the wax. The more wax will thus melt and the sphere will go deeper in the wax. It can be observed that the iron sphere goes to the deepest into the wax, lead sphere goes to the least, and copper sphere goes to the intermediate depth. This shows that for equal rise in the temperature, the three spheres have absorbed different amounts of the heat. This means that the property which determines the amount of the heat absorbed by a sphere is different for all the three spheres. This property is called as the specific heat capacity. मतलब जो स्पीयर मटेरियल का जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ द हीट जब बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद जितनी एब्सॉर्ब करेगा सो दैट द स्पीयर विल गो टू दैट मैक्सिमम डेप्थ इन द वैक्स लैब. सो एज वी कैन सी फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट दैट आयन का जो मटेरियल का जो स्पीयर है दैट गोज टू द मैक्सिमम डेप्थ इन द वैक्स लैब, देन कॉपर एंड देन लीड. सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट कि आयन जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द हीट उसने एब्जॉर्ब की ड्यू टू विच it has gone to the maximum depth in the wax slab. So the amount of the heat energy required to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object. So specific heat capacity is denoted by the letter small c. The SI unit of the specific heat is joule per degree Celsius, kg, and the CGS unit is calorie per gram degree Celsius. सो यहाँ पर डिफरेंट स्पेसिफिक कैपेसिटी दी है वाटर की 1.0, पैराफिन वैक्स दैट इज 0.54, केरोसिन 0.52, एल्यूमिनियम 0.215. दिस इज बेसिकली फॉर द अंडरस्टैंडिंग. So if a specific heat of an object is C, अगर specific heat एक some object की अगर C है and mass of that object is M, and if the temperature of the object is raised by the delta T degree Celsius, the heat energy absorbed by that object is given by, मतलब कि heat energy कितनी absorb की है that we can find. ये सेम फॉर्मूला है जो कि हमने क्लास 8th में स्टडी किया था, दैट इज Q. द हीट इज गिवन बाय Q, so which is equals to M into C into dt or delta T, that is the change in the temperature. So this same formula which we have seen in the class 8, that is same given here कि amount of the heat कितनी absorb की है, so that we can find that with the help of this formula mc dt. So in the same way, if specific heat of an object is C and the mass of the object is M, and if the temperature of the object is decreased by 10 delta T degree Celsius, the heat energy lost by the object will be mc dt. Same, that will be the delta T, that is the temperature, which is the change in the temperature. So heat exchange. Again, we are having one concept of the heat exchange next. Till now, if you are having any doubt, then you can ask in the live chat. So all your doubts will be answered at the end of this. So we will take 10 to 15 minutes for that your doubts. So next हम देखते हैं heat exchange. If heat is exchanged between a hot and the cold object, the temperature of the cold object goes on increasing due to the gain of the energy, and the temperature of the hot object goes on decreasing due to the loss of the energy. The change in the temperature continues till the temperature of the both the objects attain the same value. In this process, the cold object gains the heat energy and the hot object loses heat energy. If the system of the both the objects is isolated from the environment by keeping it inside a heat resistant box, meaning that the energy exchange takes place between the two objects only, then no energy can flow from inside the box or come into the box. In this situation, we get the following principle. Heat energy lost by the hot object is equals to heat energy gained by the cooled object. This is called as principle of the heat exchange. So again, one of the important point with regard to this chapter heat, that is the heat exchange. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि दो ऑब्जेक्ट है, one is the cold hot object and one is the cold object. So hot object is having the amount of the heat and cold object is at the non heat. सो हॉट ऑब्जेक्ट से क्या होगा कि हीट जो है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर होगी, एंड दिस ड्यू टू दिस अगर हम ये ओपन एनवायरनमेंट में अगर हम देखेंगे, सो सम अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी विल गेट लॉस्ट ड्यू टू द एटमॉस्फेयर और द सराउंडिंग कंडीशंस. बट
अगर हम ये एक आइसोलेटेड बॉक्स ले और उसमें एक हॉट हॉट ऑब्जेक्ट एंड एक कोल्ड ऑब्जेक्ट अगर हम प्लेस करें, सो वी कैन क्लियरली सी देयर दैट द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी गेन्ड बाय द cold object. That is only the principle of the heat exchange. क्या है principle? Heat exchange, that is the heat energy lost by the hot object is equals to the heat energy gained by the cold object. So next we are having topic that is the measurement of specific heat, mixing method and calorimeter. So calorimeter क्या है? That is only the heat resistant box which is having one stirrer attached and one open lid. So we can place the object, and the calorimeter which is the copper material uh, vessel is which is present there. So, measurement of the specific heat, mixing method and calorimeter. The specific heat of an object can be measured using the mixing method. For this, calorimeter is used. You have learned about calorimeter in the previous standard. If a hot solid object is put in water and in the calorimeter, heat exchange between the hot object and the water and calorimeter starts. This continues till the temperature of the solid object and water and the calorimeter becomes the equal. Therefore, heat lost by the solid object is equals to heat gained by the water in the calorimeter plus heat gained by the calorimeter. So here, heat lost by the solid object is equals to mass of the solid object multiplied specific heat multiplied by its decrease in the temperature. मतलब that is this is only the principle of the heat exchange जिस पर ये work कर रहा है. आगे भी देख लेते हैं, then we will see the overall analysis what it is told in this particular part. So heat gained by the heat gained by the water is equals to mass of the water multiplied by its specific heat multiply increase in its temperature. Heat gained by the calorimeter Q2 is equals to mass of the calorimeter its specific heat multiply increase in its temperature. Then heat lost by the hot object is equals to heat gained by the calorimeter plus heat gained by the water. Q is equals to Q2 plus Q1. Using these equations, if the specific heat of the water and the calorimeter are known, the specific heat of the solid objects can be calculated. So simple, हमें measurement करना है कि specific heat of the specific heat capacity of that solid object which we are not knowing कि उसकी specific heat capacity कितनी है. That is the amount of the heat which can be gained by that particular object. So for that we are using one instrument that is the calorimeter. और calorimeter में जब हम एक hot object को place करते हैं, so heat lost by that solid object is equals to heat gained by the water in the calorimeter. So ये क्या है? That is only the heat gained by that water in the calorimeter. तो वो कितनी heat absorb करेगा plus heat gained by that calorimeter. That is only we are showing here. That is Q is equals to Q2 plus Q1. लेकिन ये अमाउंट ऑफ द हीट कैलकुलेट कैसे होगी? सो ऊपर हमने जो देखा था m इंटू सी इंटू डी टी, दैट इज मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू द डेल्टा टी टेम्परेचर. सो वहां पर क्या है कि मतलब जब सॉलिड ऑब्जेक्ट जो हीटेड है वो जब हीट लॉस करेगा, सो द हीट विल बी गेन्ड बाय दैट कैलोरीमीटर एंड द कुछ हीट वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा. सो हीट गेन्ड बाय द वाटर दैट इज Q1 वो कैसे कैलकुलेट होगी? मास ऑफ द वाटर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. साधारण सी बात है, कोल्ड वाटर जो की है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा. दैट मीन्स द वाटर्स टेम्परेचर विल गो ऑन इंक्रीज. So we are going to check the change in the temperature. Initially कितना था, final कितना है. That means that will be the T2 minus T1, that is final minus the initial temperature. और heat gain होगी calorimeter से भी. That will be the Q2. So mass of the calorimeter multiplied by the specific heat capacity of the calorimeter multiplied by increase in the temperature. So, as per the heat exchange law, which will be useful in this calculation of the amount of the heat, so heat lost by the hot object is equals to heat gained by the calorimeter plus heat gained by the water. We have also seen about these numericals on the basis of the heat exchange principle in the class 8, and that logic or the knowledge which will be useful for this solving the numericals. So we are taking the solved example in the next part. और else we can see here the solved examples, जो कि तीन ही solved examples है which will be helpful for you solving the numericals exercise problems also. तो देख लेते हैं कि solved examples में example 1 क्या है. How much heat energy is necessary to raise temperature of 5 kg of the water from 20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius?
सो यहाँ पर हमें हीट एनर्जी मतलब कितनी रिक्वायर्ड होगी कि 5 kg ऑफ द वाटर हमारे पास है और हमें हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर T1 20 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। सो साधारण सी बात है, हमें हीट फाइंड करनी है। सो हीट से रिलेटेड हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर स्टडी किया है कि हमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है। दैट इज Q इज इक्वल्स टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। So we are having the mass given, we are having the temperature T1 and T2 given, or specific capacity that is the one that is the 1 kilogram kilocalorie per kg degree Celsius at as it is talking about with the वाटर परस्पेक्टिव। और वाटर का जो हमने यहाँ पर देखा था कि वाटर का 1.0 है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और केजी पर किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। सो दैट इज द amount of the heat energy which we are going to calculate. So delta T हमें required है। delta T कैसे आएगा? T2 that is the final temperature minus initial temperature 100 minus 20 that is 80 degree Celsius which is delta T। और delta T फॉर्मूले में पुट करने के बाद we are getting that 400 kilocalorie the amount of the heat required। हो गया यहाँ पर न्यूमेरिकल 1। और एग्जाम्पल 2 में क्या है? A copper sphere of 100 gram mass is heated to raise its temperature to 100 degrees Celsius and is released in water of mass 195 gram and temperature 20 degrees Celsius in a copper calorimeter। Copper calorimeter water दिया है, object दिया है। So we have to find the if the mass of the calorimeter is 50 gram, what will be the maximum temperature of the water? We have to find the temperature of the water। So again we can use the law of the heat exchange that is Q is final is equals to Q2 plus Q1, Q1 plus Q2, एनीथिंग विच कैन बी यूज। और जो हमें पर्टिकुलर हर एक इसकी जो फाइंड करनी है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द हीट। सो वी कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ द Q इज इक्वल्स टू M इंटू C इंटू dt विच हैव टू अप्लाई फॉर द वाटर कैलोरीमीटर सॉलिड ऑब्जेक्ट। देन वी कैन एबल टू सी द हीट लॉस्ट हीट गेन जो कि हीट प्रिंसिपल एक्सचेंज है। सो वी कैन इजिली एबल टू कैलकुलेट विद दैट and we can get here the value of the T that is 23.8 degrees Celsius। So try to solve these numericals on by seeing this as these are the simple calculations. But then also if you faced any doubt or difficulty then you can also comment regard with that. Then we will be taking that particular numerical in more depth. So if 80 gram of the steam of the temperature 97 degrees Celsius is released on an ice slab of the temperature 0 degrees Celsius, how much ice will melt? How much energy will be transferred to the of ice when the steam will transform to the water? ये जो न्यूमेरिकल है that is of the latent heat of the melting of the ice, that is latent heat of the fusion and latent heat of the vaporization। So we have to check only the state change। तो स्टेट के हम यहाँ पर ये न्यूमेरिकल डिटेल में देखते हैं कि latent heat of the melting ice जो कि हमें 80 किलो कैलोरी पर ग्राम हमने यहाँ पर दी गई है। latent heat of the vaporization of the water 540। ये बेसिकली दिस विल बी गिवन इन द न्यूमेरिकल। मतलब यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन ये मेंशन होगा कि लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन कितना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है। सो मास ऑफ द स्टीम हमें यहाँ पर 80 ग्राम जो कि दिया है। टेम्परेचर ऑफ द स्टीम हमें 97 डिग्री सेल्सियस रिलीज्ड वो भी दिया है। टेम्परेचर ऑफ द आइस स्लैब आइस विच इज बेसिकली एट द 0 डिग्री सेल्सियस वो भी हमें यहाँ पर दिया है। सो हीट रिलीज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द स्टीम ऑफ द टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर टेम्परेचर। मतलब जो स्टीम है वो 97 डिग्री सेल्सियस से into water of the temperature 97 degree Celsius, that will be the Q is equals to ml, that is amount of the heat can be calculated mass into latent heat of vaporization which will be coming 80 multiplied by 540। heat released during the conversion of water to water that is state यहाँ पर मतलब एक जो है हमें यहाँ पर जो बात नोटिस करनी है कि जब स्टेट का कन्वर्जन हो रहा है। So that is we can see here the conversion of steam into the water। So we are using the formula M into L। और जब स्टेट चेंज नहीं हो रहा है दैट मीन स्टेट इज सेम वाटर वाटर दैट इज लिक्विड लिक्विड। यहाँ पर जो स्टेट चेंज हो रहा था दैट इज गैस इनटू द लिक्विड। सो स्टीम इनटू वाटर वी आर यूजिंग मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ml। जब स्टेट चेंज नहीं हो रहा है दैट इज स्टेट इज सेम वाटर 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 कन्वर्जन फ्रॉम 97 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस वी हैव टू यूज द फॉर्मूला that is M into C into delta T।
So after using that 80 into 97, so total heat gained कितना होगा? That means we are considering this total heat and this total heat. So which will be 50,960 calorie, and some mass of the ice will melt due to this heat. तो कितना ice melt होगा? So ml is equals to मतलब mass some amount of the ice will get melt multiply by latent heat of the fusion, जो कि amount of the heat used to require to melt the that particular ice. और heat तो हमने यहाँ पर calculate की, that is 50,960. From that we will get the mass of the ice which will be melt, that is 637 gram. The 637 gram ice will melt and 50,960 kilocalorie will be the given to the ice. So one thing which we have to remember, जैसा कि मैंने अभी बोला कि अगर स्टेट चेंज हो रही है, सपोज सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, गैस टू सॉलिड, अगर स्टेट चेंज हो रही है, फॉर्मूला विल बी Q इज इक्वल्स टू एम एल। और स्टेट चेंज नहीं हो रही है, सॉलिड का कन्वर्जन सॉलिड में, लिक्विड का कन्वर्जन लिक्विड में, जैसा कि यहाँ पर हुआ था कि लिक्विड जो है वाटर एट द 97 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर ओनली ऑफ द 0 डिग्री सेल्सियस. So we are using the formula that is m into c into delta t. So similarly, on the basis of this only, the numericals in the exercise are given. But if you faced any difficulty or any doubt regards with that, तो चार ही न्यूमेरिकल जो यहाँ पर दिए हैं that are also based on the same concepts which we have studied in this chapter, और जो न्यूमेरिकल्स जो एग्जांपल है वो हमें दिए हैं, उसी के बेसिस पर वो न्यूमेरिकल्स भी है. सो ट्राई टू सॉल्व विद दैट. और अगर आपको कुछ डाउट आता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर विद दैट क्वेश्चन. और अगर आपका अगर कुछ डाउट होगा, सो देन यू कैन आस्क इन द लाइव चैट आल्सो विद रिगार्ड, we will be try to answer with that question also. Next part we will be starting with the next chapter, that is the refraction of the light, which is again one of the interesting and uh, most important also chapter we can say. And we have to also think with perspective of the light. मतलब हर एक perspective से हमें सोचना है कि हीट हो गया, लाइट हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, that all. So we will be stop here. So thank you for joining and all. And if you like this video, then do like, share, and subscribe to this channel. And stay tuned for the further more educational videos. Thank you.